बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या है, पहले ब्रीफली मैं जरा आपको बता दूं। चैप्टर 1 में है जनाब अली, चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 क्लास 6 मैथ, तो इसका नाम है जी प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। बेसिक टॉपिक्स क्या हैं इसमें? सबसे पहले तो आपको पता चले जी कि होल नंबर्स कितने किस्म के होते हैं जी? 2 किस्म के होते हैं, आपको पता है। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जैसा कि 2 होल है, 4 है, 6, 8, 10, odd numbers which are not divisible by 2। ठीक है जी। जैसे 1 है, 3, 5, 7, 9 etc। सो पहली चीज तो ये है इस चैप्टर में। दूसरा, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं which have exactly या only 2 factors। और वो 2 factors कौन से होते हैं? The number 1 and itself। For example, 2 is a prime number because 2 is only divisible by 1 and 2 itself. 3 is also a prime number, only divisible by 1 and 3. 4 prime number नहीं है क्योंकि 4, 1, 2 और 4 3 numbers divisible। 5 prime number है, divisible by only 1 and 5। तो जिस नंबर्स पे ये डिविजिबल है उनको इसके फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर्स हैं सॉरी कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स आर नंबर्स which have more than 2 factors। For example, 4 has 3 factors, 1, 2 and 4। 6 has 3 factors, no 4 factors, 1, 2, 3 and 6। 1 6 are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6 and 6 1s are 6। तो आपको 6 इन नंबर्स की टेबल में मिलेगा और 4 और 6 आपको इन नंबर्स की टेबल में मिलेगा। तो 6 के लिए 4 फैक्टर्स हैं, इन चारों के लिए डिविजिबल। अगला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है जी? आप खुद सोचें जरा। 7 है? नहीं। 8, 1 2 4 8 8। ठीक है जी। 8 भी है एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो उसके बाद मजीद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टर्स तो पढ़ लिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है जी। जो नंबर जिन नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी। जैसे 4, 1, 2 और 4 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है।
6 जो है 1 2 3 एंड 6 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 8 जो है 1 2 4 और 8 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये तो फैक्टर्स हैं। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके जरिए किसी भी नंबर के, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। ठीक है जी। प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। तो कॉम्पोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। जैसे 8 है, अभी हमने देखा कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से थे जी? फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास थे 1 2 4 और 8। लेकिन जब प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 कैसे होगी? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 कैसे मालूम करेंगे? इस तरीके से आप 8 को डिवाइड करते जाओगे, जो 1 से बड़ा इसका फैक्टर है, ठीक है, वो है 2। तो 2 4 ज़ा 8, इसको डिवाइड करो इसी तरह छोटे नंबर में, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 4। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको हम इंडेक्स नोटेशन में तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2s हैं आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 2 to the power 3। इसका यही मतलब है 2 multiplied with itself thrice, 2 multiplied to itself 3 times, ठीक है जी, 2 to the power 3। तो ये है, इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। लिखने का एक खास तरीका है, ठीक है जी, इंडेक्स नोटेशन लिखने का एक खास तरीका। जैसे कोई और नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं, फर्स्ट है 2 into 2 into 2, ये तो 8 हो गया, into 3 24, और क्या हो गया 8 into 3 24 into 3, ठीक है जी। कोई नंबर है जिसके ये प्राइम फैक्टर है, तो इसको इंडेक्स नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? कितने 2s हैं? 3, और कितने 3s हैं? 2, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन भी हो गया। नेक्स्ट इस चैप्टर में है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अभी आपने 8 को देखा, 8 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 to the power 3, ठीक है जी। इसी तरह 4 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 आपके पास आएगा 4 2 multiply 2, या इंडेक्स नोटेशन में 2 स्क्वायर, ठीक है जी। तो 4 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के एग्जांपल्स क्या है जी? 4 के बाद अगला कौन सा है? 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25 6 6 ज़ा 36 7 7 ज़ा 49 etc. So these are all squares, ठीक है जी। इनको परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं, ठीक है जी। इनको क्या कहते हैं जी? These are perfect squares. All these numbers are called perfect squares. परफेक्ट स्क्वायर्स पर हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आप रूट निकालेंगे तो दैट विल बी इट्स दिस, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना है उसमें से एक नंबर यानी 2 या प्लस माइनस 2। क्यों प्लस माइनस 2? क्योंकि प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 इज ऑल्सो 4 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज ऑल्सो 4, ठीक है जी। तो 4 को रूट ऑपरेशन आप करेंगे, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं,
जनाब आपके पास आ जाएगा +2 और -2, इसको कंबाइंड हम ऐसे लिख सकते हैं +-2, ठीक है जी। इसी तरह 9 का रूट ऑपरेशन आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +3 और -3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-3, बिकॉज 9 is +3 multiplied by +3 और -3 multiplied by -3, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर रूट ऑपरेशन है और हम ये करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स पर। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जो है इसका जो आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास हमेशा एक होल नंबर आएगा, ठीक है जी। तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट आप लोगे तो होल नंबर आपके पास आएगा, हमेशा आपके पास होल नंबर आएगा। किसी और नंबर का लोगे जैसे 2 का या 3 का तो आपके पास होल नंबर नहीं आएगा। स्क्वायर रूट हम उसका भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं, ठीक है। क्यूब रूट क्या चीज है, ये क्यूब रूट ऑपरेशन हमारे पास जिस तरह परफेक्ट स्क्वायर्स थे ये, ठीक है जी, दो एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और हमारे पास ये नंबर्स आते हैं, ठीक है जी। जैसे 2 × 4 है, 3 × 3 9 है, 4 × 4 16 है, 5 × 5 25 है। दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हुए और ये नंबर हमारे पास आए, इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। परफेक्ट क्यूब्स 3 एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा एक परफेक्ट क्यूब, ठीक है जी। जैसे 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 16 × 4 में 64 है, ठीक है जी। तो ये सारे क्या हैं जी, परफेक्ट क्यूब्स। अब जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स पर हम स्क्वायर ऑपरेशन करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, असल में यहाँ पे एक छोटा सा 2 होता है, ठीक है, जो नॉर्मली हम डालते नहीं हैं। और बेसिकली होता क्या है कि जब हम स्क्वायर ऑपरेशन करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर का, तो बेसिकली इस स्क्वायर रूट का मतलब है टू द पावर 1/2। उसके बाद हमें पता है कि 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2, और 2 × 2 को इंडेक्स नोटेशन में हम लिख सकते हैं 2², और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो व्हाट डू वी गेट 2, ठीक है। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ रूट ऑपरेशन बेसिकली, ठीक है। हम डायरेक्टली कर लेते हैं +-। द सेम इज ट्रू फॉर -2 as well, -2 का स्क्वायर हाफ और -2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए एंड वी गेट -2, वी गेट 2 ऑल्सो एंड -2। ये जनाब इसी तरह इस पर जो ऑपरेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं जी, 8 to the power 1/3। जैसे ये स्क्वायर रूट था 1/2, तो ये होगा 1/3, ठीक है जी। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 2 to the power 1/3। इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखेंगे तो 2 क्यूब पावर 1/3, और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वी गेट 2, ठीक है जी। So the same process can be done with 27. इसके प्राइम फैक्टर्स 3 × 3 हैं, इंडेक्स नोटेशन 3 to the power 3 हो जाएंगे, और 3 to the पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वी गेट 3। तो द क्यूब रूट ऑफ 8 is equal to 2, द क्यूब रूट ऑफ 27 is equal to 3, ठीक है जी। तो जो नंबर 3 दफा मल्टीप्लाई होके परफेक्ट क्यूब को बनाएगा, जब इस परफेक्ट क्यूब का हम क्यूब रूट लेंगे तो वही नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है जी। So this was all about cube roots and square roots. Okay,
The next topic, the seventh topic in this chapter, first chapter, class 6, maths, is lowest common multiple. You are already familiar with what an LCM is, right? But I still explain it to you. And the last topic is highest common factor. You're also familiar with this topic, but I still do both of them. So, first we need to know what a multiple is and what a factor is. You already know what a factor is. So, what is a multiple? Let's talk about the multiples of 2. So, what are the multiples of 2? The first multiple of 2 is 2 itself. The second multiple is 4. The third multiple is 6. The fourth multiple is 8, and so on. Right? So these are the multiples of 2. These are the multiples of 2. What are the multiples of 3? They are 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, and so on. So all these numbers are the multiples of 3. Now, what are the common multiples of 2 and 3? What are the common multiples of 2 and 3? Right? What are the common multiples of 2 and 3? So the common multiples are those which can be found on both sides. So what are the common multiples? We notice that we have 6 on both sides, and we have 12 on both sides, and we have other numbers also, right? So every second number on this side and every third number on this side are common. Let me write down some more numbers. 15, 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30. So these are all common multiples of 2 and 3. So what are the common multiples of 2 and 3? Common multiples of 2 and 3. So the common multiples are 6, 12, 18, 24 and 30. 6, 12, 24, 18, 24 and 30. So these are the common multiples. You can find them on both sides. So what is the least common multiple? What is the smallest number among these? What is the smallest number? Obviously it's 6, right? So the least common multiple of 2 and 3 is 6. So I hope now you know what a least common multiple is. In short, we call it LCM. Just a So, but there is another way of finding the LCM, right? LCM of 2 and 3. So you write 2 and 3, you divide them by a number and reduce these two numbers to 1. So there is no such common number which can be used to reduce these two numbers to 1. So we use 2 ones are 2,
and then in the second step we can reduce this 3 to 1 also. So we have reduced both these numbers to 1 by dividing them by 2 and 3. So we multiply these two. This is the LCM of 2 and 3. 2 multiplied 3 is equal to 6. So we get the same thing, right? We did it in a different way. This is the second method of finding the LCM, right? This was just to make you understand the whole concept of LCM. So this is what LCM is about, right? I'll do another example. Let's find the LCM of 10 and 15, right? So 10 and 15, and we have reduced these two numbers to 1 by dividing them with different numbers. So let's start with, you can start with 2 or 3 or 4 or 5. 2. 5s are 10, and you can't divide 15 by 2. Now both are divisible by 5. 5 ones are 5, 5 3. Now we are left with 3. We have to reduce this 3 to 1, 3, 1, 1, 3, right? We got these three numbers. So the LCM of 10 and 15 is equal to 2 into 5 into 3. 2 multiplied 5 multiplied 3. What do we get? 2 5s are 10, 10 3s are 30. So this is the LCM of 10 and 15, 30. Right? The next topic is highest common factor. In short, HCF. So, first of all, we need to know what a factor is. If 6 is a multiple of 3, then 3 is a factor of 6, right? And if 6 is a multiple of 2, then 2 is a factor of 6. So, what are the factors of 6? 3 and 2. 3 and 2 are the factors of 6. What are the factors of 9? We can see at least one factor here, 3. Right? There are other factors also. So, factors are those numbers, for example, the factors of 9. So, where do we find 9? We find 9 in the 1 times table, in the 3 times table, and in the 9 times table, right? 1 9s are 9. This is where we find 9 in the 1 times table. 3 3s are 9. This is where we find it in the 3 times table. And 9 1s are 9. So we find 9 in these 3 tables. So 1, 3 and 9 are the factors of 9, right? Now, let's find out the factors of 6. So in which times tables do you find 6? In the 1 times table, in the 2 times table, in the 3 times table, and in the 6 times table. Okay? 1 6 are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6, and 6 1s are 6. So these are the factors of 6. These are the factors of 9. Okay? So this is what a factor is. Now what are the common factors of 6 and 9? The common ones, which are there in both. The common factors of 6 and 9 are 3. Well, ignore 1, right? Other than 1. So the common factors of 6 and 9. Okay, we have 1 and 3. Right? So no other common factors. So we have 1 and 3. So what is the highest among these two?
the highest common factor of 6 and 9, it is obviously 3. So 3 is the highest common factor of 6 and 9. I did all this to make you understand what an HCF really is. So a simple method of finding the HCF of two numbers is this, 6 and 9. We have to look for a number which is a factor of both these numbers, right? So a common factor is 3. We have to look for a common factor. 3 2s are 6, 3 3s are 9. And now we have to look for another common factor to reduce this 2 and 3 to 1. But we don't have a common factor of 2 and 3. So we stop here, right? And what do we get? 3. 3. So any number, you take a common factor of the numbers, right? And you do the process, repeat the process till you reach a point where you can't find a common factor, right? So 3 was a common factor here. We reduced 6 and 9 to 2 and 3, but we cannot find a common factor for 2 and 3. There is no common factor for 2 and 3, right? So we stop here. And using 1 is useless. 1 cannot reduce these to 1s, right? So we will again get 2 and 3. So using a 1 is useless. It won't reduce these two numbers to 1s. So we stop where we don't have a common factor for both these numbers. 3 numbers or 4. So this is the HCF, right? So this is enough for today. Chapter 1 मैंने सारा पढ़ा दिया. ज़ाहिर है अब आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ नहीं भी कर सकते, ठीक है? तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा. उससे पहले आप नीट कॉपीज़ ले लें, रफ कॉपीज़ मैथ्स की ले लें. रफ कॉपीज़ में खुद एक्सरसाइज करें और नीट कॉपीज़ में फिर जो क्वेश्चंस नहीं आते वो भी कर लें, इधर से देख के वीडियो से देख